Ladies and gentlemen, on behalf of the Apadani Interdisciplinary Research Society, I feel privileged to welcome to all of you on this special gathering titled A Cultural Dialogue on Apadani Heritage, along with the book release of Sri Gyati Rana sir. Today's event is a celebration of tradition, research, and identity, serving as a reflection of our roots and a vision for our future. I extend a heartfelt welcome to each one of you and our esteemed chief guests, dignitaries, scholars, community elders, and their attendees. Thank you for being here to support and cherish the Apadani legacy. I request Sri Gyati Rana sir to please come forward and honor our chief guest. Thank you, Padma Shri Waidi Thongchi, and thank you, Rana sir. Now I invite Sir Hage Dole, Chairman of AIRS, to step onto the stage and felicitate our dignitaries. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Okay, next. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, now to formally open today's proceedings, I invite Dr. Gyati Kado to deliver the welcome speech. Respected Chief Guest, Padma Shri Waidi Thongchi sir, esteemed dignitaries, Honorable Advisor, and committee members of Apadani Interdisciplinary Research Society, dear friends, ladies and gentlemen, a very good afternoon to you all. It is with immense pleasure and heartfelt gratitude that I welcome each one of you to this special occasion, a cultural dialogue on Apadani heritage book release event of Sri Gyati Rana. We are deeply honored to have with us today our chief guest, Padma Shri Waidi Thongchi, a celebrated literary icon whose presence adds grace and meaning to this celebration. Sir, we are truly privileged by your presence and thank you for being here with us. I also extend a warm welcome to all the distinguished dignitaries, Honorable Advisor, and respected committee members of AIRS, whose guidance and collective vision have brought this meaningful event into reality. A special word of welcome also goes out to our partners and supporters who have stood by us and contributed in various areas to help bring this event to life. Your presence here today is not only encouraging but also symbolic of the collaborative spirit we value deeply. Today, we come together not only to celebrate the release of Sri Gyati Rana's literary works, but to engage in a deeper reflection of the richness of Apadani heritage, its traditions, its oral wisdom,
its stories and its spiritual depth. Sri Gati Rana has dedicated his life to preserving and promoting the cultural identity of the Apatani people through his writings, and it is only fitting that we honor him in this way. This program is a humble yet sincere tribute to his lifelong commitment, and we hope it will inspire more dialogues, more documentation, and a great sense of pride in our roots. On behalf of heirs and everyone involved, I once again extend a warm and respectful welcome to all of you. May today's gathering be a celebration of heritage, wisdom, and the enduring power of the written word. Thank you. Once again, welcome. Have a great time ahead. Next is to help us understand the spirit and mission behind heirs. I now invite its chairman, Dr. Hage Dole, to give us a brief introduction to heirs. नमस्कार सभी को। ये जो ईयर्स है, इसको बताने के लिए I have to start with the philosophical talks. Nothing comes from nothing. इसका कहने का मतलब ये है, हर चीज़ का पीछे में कुछ ना कुछ कारण होता है। उसी तरह ईयर्स का पीछे में भी एक कारण है। There is a reason behind how the year started. इसका actual start, if I look back, it was in I think when I was in the higher secondary school in the RK Mission, Nartanagar. Once I went to the library and I saw a magazine called Scientific America. Scientific America is a collection of a research which is happening, the latest technology which are happening across the world. So after reading that, of course, I could not read much because maybe that was at that level, it was too much for me. But I liked the concept. तो उस समय मैंने सोचा कि maybe in the future similar kind of a magazine type का ऐसा कुछ कर सकने से कैसा होगा, or Scientific India, or maybe Scientific Arunachal or something like that. उसके बाद life happens, we all got busy. I also forgot many things. But I feel that what you think and dream in the childhood, it never goes. It always remains in our subconscious mind. And sometimes I feel the purpose of our life is to accomplish, materialize what we have dreamed of in our childhood. So after getting little settled, then I thought कि why not start about this one. तो सोचा कि क्यों ना साइंटिफिक अमेरिका को साइंटिफिक इंडिया को कुछ किया जाए, but it was too monstrous to handle that one. तो थोड़ा सा लेवल नीचे जाए, साइंटिफिक अरुणाचल, but still it was still bit difficult. It was seeming difficult. So thought that why not come to the community level. Before that, I want to say that जो हम लोग बचपन में देखता है, सोचता है, उसको हम लोग जो दिल से जो सोचता है वो कभी भी नहीं जाता है. Never goes. It remains in our subconscious. जिस तरह से आप एक सीड को जितना जमीन अंदर गाड़ेगा उतना ही उसका पोटेंशियल बढ़ता है. उसी तरह हम लोग का आइडिया भी जो क्या है, जितना आप उसको बुलाने की कोशिश करेगा वो बोलेगा नहीं, वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट होकर आने की कोशिश करेगा. इसलिए हम सबको ट्राई करना चाहिए कि बचपन में जो सोचा है तो सबको एक मेटराइज करने की कोशिश करना चाहिए. तो हम लोग आइडिया क्या है कि देन आई थॉट अबाउट व्हाई नॉट स्टार्ट विद द कम्युनिटी लेवल. तो उससे ये जो आइडिया है कि एयर्स का अपॉर्चुनिटी इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च सोसाइटी, ये एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, इसमें जो डाटाबेस है, all the journals and all the theses, all the research works and all the books which has been done by the Apatani peoples, उसको हम कंपाइल करके रखा हुआ है. and it's also a platform, ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें हम फोकस कर रहे हैं रिसर्च के लिए, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म जहाँ में डिस्कोर्स हो, ऐसा एक प्लेटफॉर्म जहाँ में थेसिस हो, एंटीथेसिस हो और सिंथेसिस हो. तो ये हम लोग का जो है. तो अभी मैं
मैं एड्स के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। ये जो वेबसाइट, there is a website, their cases, and the publication also you can read, and this is one aspect. Then we have also this one. We have a space here, pages for the books by Apadani authors. There you can see these are the people who have written the books. You can go here and you can click on the whichever book you require. It will give you to the send you to the link, and from there you can purchase the book. So this is one thing we have done, and then we have also this one. We have also this. This is if any person who want to do the patents, they can approach us. We'll try to we'll help them to patent their works. And also this one, if they want to check their plagiarism, that's also we can do. And there are many other features are here. And this we are this is our core committee. And you can see here our Nansus has also already advisors. And I believe and I know that all of these people, they have been the very they have been the building blocks in this making of these years. और हर हमको I know that हर हम लोगों का एक सपना जो बचपन में देखा था उसको हम फुलफिल करने की कोशिश कर रहा है. And if you this is our well wishers, this one, this first one is a Papa restaurant. It's owned by the Kimei Kiran. He's sponsoring today's high tea and Galleria. Is owned by the Tarumanya. She's sponsoring our this one coats and this one mufflers. And if you write our words, then you can also donate us. This is the QR code. If you like our work, you can donate us. And we should display that. Include this in the donor list also. So far, the highest donor is given by our own Gathera sir. He has given this 40,000. So this is about our years. Apart from this, we have some more are there. Some more social media are there. Like we have opened our pages in the Facebook page. You can follow in our Facebook page also. AIRS officials. And then we have a YouTube also. AIRS officials in the same name. AIRS officials. YouTube also you can follow here. And whatever the program we will be doing here, we will try to upload it in the Facebook and YouTube. And so this is as a whole about regarding the AIRS. Now, what is the future of AIRS? So we will try to invite as many research as possible. We will try to encourage as many research as possible. And if possible, as I said before, that we will extend it to the scientific organization. Then if it succeeds, then further we can go further into the maybe in the regional level, notice regional level. सपना देखने में तो क्या जाता है? Doesn't we'll see. And the soul of our AIRS is research. Many people ask us, what is our objectives? We have 3 objectives: research, research, and research. Thank you very much. Next, I now request Mrs. Kago Mariam to kindly come forward and read the citation of Sri Gatirana. Sorry. Thank you. Good afternoon, everyone. Sri Gatirana is a cultural activist, poet, writer, and lyricist in the Apatani and English language. He hails from village Hari, Lower Subansiri district, Arunachal Pradesh. Born on 10 October 1963, he completed his matriculation from Government High Secondary School 0 and later served the Public Work Department, Government of Arunachal Pradesh, retiring as Head Assistant.
A prolific contributor to Apatani literature and indigenous cultural discourse, Mr. Rana has authored several books based on the oral traditions and philosophy of the Apatani people. His notable works include A Fine Flag of Mijimigu, Volume 1 and 2, Tanibidi, Apatanis and Their Faith and Culture as I Know, Myoko and Myoko Hymns, and the Ui Lukonim series. His articles have appeared in various journals and newspapers, and his editorial efforts led to the publications of Papyruscope, the first Apatani cultural journal in Arunachal Pradesh. For his literary contributions, he was honored with the Living Legend Award in Literature by the Golden Jubilee Celebration Committee of the Apatani Capital Complex Tree Festival. He has served in key roles in organizations such as the Indigenous Faith and Cultural Society of Arunachal Pradesh, Popisami Society, Medarnelos Council of Apatani, and Arunachal Vikas Parishad. He is presently a member of the Expert Committee for Financial Assistance to the Veteran Artists from Arunachal Pradesh under MEZCC, Ministry of Culture Affairs, Government of India. I welcome you, sir, to kindly take it. I now invite Sri Gyati Rana to felicitate the supporters in recognition of their contribution to the publication of his book. Thank you, sir. Rana, sir. Thank you, sir. Thank you once again, sir. Thank you on behalf of the family. Next, Laba Potom. Thank you, sir. Next, Kaling Ratan. Thank you, sir. Thank you. Okay, now comes the highlight of today's gathering, the official launch of the much-awaited book by Sri Gyati Rana sir, a profound thinker and a cultural researcher. I request our chief guest to kindly come forward for the book unveiling ceremony. आज के चीफ गेस्ट टोंगची सर, स्पेशली मैं आपसे बहुत ही आभारी हूँ। आज मेरा ये छोटा सा बुक लॉन्चिंग में आपने आके ये माहौल को बनाया है और जितना भी मेरा ये स्पॉन्सर जिन्होंने अभी हम फेलिसिटेट किया पोस्ट बुक नहीं आया, क्योंकि लिख के रखना वो तो इतना बड़ा बात नहीं है, लेकिन उसको पब्लिश करके बुक फॉर्म में लाना ये बहुत ही एक मीनिंग देता है। अदरवाइज उन लोग साथ नहीं देने से ये एक मेरा देश में दुर्नीति जमा होकर रहना था, तो उन लोग का पुशअप से मेरा आगे बढ़ा नहीं सका है। इसके लिए जितना वो जो हमको स्पॉन्सर किया है उन लोग को मैं धन्यवाद दिल से और हमारा पत्रकार कम्युनिटी की तरफ से। और दूसरा ये जो है आपका जितना आप लोग स्कॉलर लोग आया है और आज ये एयर्स जो है मेरा घर में आके हमको इतना रिस्पेक्ट देके
कि मेरा काम को अप्रिसिएशन दिया है। अदरवाइज हम काम तो कर रहा था, एक इसका क्या असर होगा क्या नहीं होगा। तो पहले साल तो 2 बुक करने के बाद में तो रेस्पॉन्स ही कुछ सो डिस्करेजिंग था, लेकिन बाद में पता चला है कि आपको कुछ ट्राइबल स्टडी डिपार्टमेंट खोलने के बाद में डिसर्टेशन में रेफरेंस में जरूरत हुआ और थीसिस में भी उन लोग का मदद हुआ। ये मालूम होने के बाद में तो एनकरेज होकर हम कंटिन्यू किया है और आज हेयर्स जैसा स्कॉलर लोग आके हमको अप्रिशिएट किया है। ये बहुत ही मेरे लिए एनकरेजिंग है और मेरा जब तक सांस चलेगा मैं तो करते रहेगा और जो भी हो जितना आप लोग आके हमको एनकरेज किया है उसके लिए मैं दिल से मेरा तरफ से धन्यवाद देता हूँ और सारा अपातरी कम्युनिटी की तरफ से भी धन्यवाद। थैंक यू। Thank you, sir, for such a heartfelt and warm message. So now, before we move forward, we would like to open the floor for anyone from the audience who wishes to share a few words, perhaps a reflection on the book or a personal note for the author. If anyone from the audience would like to speak, you are most welcome, and please feel free to raise your hand. We will bring the mic to you. Okay, but we are slightly time bound, and so remarks may kindly be limited to a couple of minutes. जवाहरलाल नेहरू स्टेट म्यूजियम में उपस्थित मैं सबसे सर्वप्रथम तो मैं वाईटी तोंगची संघ जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगी कि आज आप इस हमारे जो है आपतानी इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च सोसाइटी के जो बुक लॉन्च में आप अपने मूल्य समय निकालकर यहाँ आए, उसके लिए हम पूरे आपतानी भाई बंधु आपका आभार व्यक्त करते हैं। मेरा नाम कागो माधो है और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। मुझे जो महसूस हुआ मैं उसे साझा करना चाहती हूँ। आज ज्ञाति राणा सर जी का बुक लॉन्च हुआ है, उसके लिए ज्ञाति राणा सर जी को बहुत बहुत बधाई। मैं एक रिसर्च स्कॉलर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं एक अपने समाज के होने के नाते मैं हमारे जो समाज की जो अपनी जो आस्था विश्वास है, हमारे पूर्वजों की जो ज्ञान है, ज्ञान परंपरा है, उसे समझने की कोशिश में लगी हुई हूँ और इसमें मुझे अपनी बड़े वरिष्ठों का बहुत ही मतलब मुझे आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। तो इस समय में जिस मैं जीवन की जिस पड़ाव में हूँ, तो मुझे ऐसे में अपनी ज्ञान को और प्रगाढ़ता से और ज़्यादा समझ के लिए मैं ज्ञाति राणा सर जी के पास भी जाती हूँ, क्योंकि सर जिस तरह से हमारे समाज में काम कर रहे हैं, वे हमारे जो आने वाली जो जनरेशन है, जो उन लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा संपदा मतलब प्रॉपर्टी जमा कर रहे हैं। तो मैं ज्ञाति राणा सर जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञता महसूस व्यक्त करती हूँ कि आप आज हम सभी आपतानी समाज को, आपतानी भाई बंधु को, हमारे इतना ही नहीं, आप जो है हमारे जो है एंसेस्टर विजडम है उसको लेकर आप उस पर काम कर रहे हैं और उस पे आप काम कर रहे हैं और हम मतलब ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आप इस क्षेत्र में इस जो आप यात्रा में जा रहे हैं, आप जिस यात्रा को आप लेकर आगे बढ़ रहे हैं, आप उसमें स्वस्थ आपका जो स्वस्थ हेल्दी लाइफ होकर आप हेल्थ सही रहेगा, आप जो उस कार्य को और आगे मतलब ले जाए। और मैं सर के 1-2 किताब पढ़ रही हूँ, लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ कि उसमें मैं कंप्लीटली अभी जस्ट बहुत गहराई से मैं नहीं जा रही, मतलब मैं उसको 2-3 बार पढ़ूंगी तो मुझे उसकी गहराई को और मैं समझ पाऊंगी, क्योंकि उसमें जो भाषा लिखी गई है जी, मैं और कोशिश करती हूँ कि मैं उस पे और मतलब गहराई से पढ़ना चाहती हूँ। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने बहुत ही ज्ञानपूर्वक मेरी बातों को सुना। और मुझे ये मेरा नाम है राधे रुचा और सबसे पहले मैं आपतानी इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च सोसाइटी के चेयरमैन एंड सभी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को मैं
सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू। इस नोबल इनिशिएटिव के लिए जो आपने जो कदम लिया कि आपने कहा कि आपकी एक ड्रीम है कि आपने इसकी शुरुआत किए थे कि आप एक साइंटिफिक गवर्नमेंट पे खोलेंगे, बट वो आपने बहुत लेवल हाई हो गए थे तो थोड़ा सा पीछे आकर ये अभी शुरुआत कर दी है। उसके लिए सभी को कंग्रेचुलेशंस एंड आते जाती रहना, कंग्रेचुलेशंस ऑन लॉन्चिंग योर न्यू बुक। और यहाँ जितने लोग आए हैं, थैंक यू टू ईच वन ऑफ यू। मैं समझ सकता हूँ कि ये एक इट्स मोर लाइक अ लिटरेरी इवेंट, हैड इट बीन अ कल्चरल इवेंट जहाँ पे डांस गाना होता तो मे बी दिस स्टेज वुड हैव बीन फुल्ली ऑक्यूपाइड, बट स्टिल आप लोगों ने समय निकाल कर आया तो यहाँ पर मुझे देखकर अच्छा लग रहा है। मैं अभी फिलहाल तो मैं कोई एकेडमिक बैकग्राउंड तो हूँ नहीं, बट मैं बहुत रुचि रखता हूँ। आई हैव बीन इंटरेस्ट इन लर्निंग on topics that's related to my community, and since Madam ने limited time allowed के मुझे कहने के लिए, so once again thank you to each one of you and I look forward to your work. Thank you. Yes, I got very keen over the title of the book, the very word "priest" with my culture and my faith. I just want to know what prompted me to keep the caption of the book this way. Is there anything like Dr. Dole said, thesis, antithesis, and synthesis? Is there any fear or war between generation, regeneration, or even degeneration in the current? Very good afternoon, everyone. Good morning, good afternoon. I'm Nani Mamu, and since I heard your name, Gyati Rana sir, I was really excited about this day. I didn't know about the existence of this society, but since my husband is apart, he asked me to come, and when he mentioned that you are the one coming, so I couldn't resist. आना ही था आपको, because sir, you remember 2020 में I gave you a call. It was the first time I read your book, Michi Mugu. You talked about the genesis of the universe, जिसमें जीवी जमा, and किस तरह से human being आता है, and then you also talk about the tattoo, जहाँ में there's this misconception that because we need to deface our women in order to make them ugly, we give them tattoo. But then नीचे बुक में लिखा हुआ है कि there was a very beautiful woman जिसका deep dark tattoos था. So I think this ये primary source में हम लोग गए हैं. So I think I've been an avid reader since childhood, and then I've been consuming everything जो हम लोग society का regarding मिलता है. Zero Sole हो, ये क्या था वो था ये स्ट्राइक का अपतनी वर्जन हो, और फिर ये रंट पीगे हो, हम सब कुछ कंज्यूम किया। और आपका जब बुक आता है नीचे में, इट हैज बीन अ रियली, मतलब आई लव हिस्ट्री, आई लव एंथ्रोपोलॉजी, एंड हम लोग का जो अपतनी का जो हिस्ट्री यूजुअली गेट्स वेरी सबऑर्डिनेट हिस्ट्री, तो काफी साइडलाइन हो जाता है। तो इट वाज थ्रू योर बुक कि हमको एक्चुअली हिस्ट्री, अपतनी का हिस्ट्री पढ़ने मिले। नीचे में जो बहुत टफ है उसको आप इतना सिंप्लीफाई करके आपका बुक में लिखा है। तो I didn't want to miss this day today. I really wanted to thank you, sir. I told you आप बोलते कि सर आपको जितना बुक लिया सारा खरीद लेगा, पर पैसा भी नहीं था तो लिमिटेडली खरीद पाए और बहन लोग को बांट दिया। तो सर I really want you to continue writing your books ना सर। आपको मतलब इम्पैक्ट दिखाई नहीं देता होगा, but then पर्सनल लेवल में हमको बहुत इम्पैक्ट किया, and I would really transfer it to my son also and everyone who I come in contact with, उसको हम नीचे बुक पढ़ो जैसे भी बोलेगा। तो जब हम लोग का ट्रेनिंग हुआ था तो उसमें भी हम लोग का एजुकेशन पॉलिसी में बात हुआ था, तो हम जो बहुत बोला था कि आप लोग हम लोग जीरो में एजुकेशन जब होता है म्यूजिक जैसा को इंक्लूड करो। व्हाई डू वी नीड टू लर्न हिस्ट्री जिसमें राजपूत वाले तो हम लोग को म्यूजिक पढ़ो, हम लोग यूनिवर्स कैसे जेनेसिस हुआ है वो सब हम बोला कि क्लास 7 में हम लोग को रामायण पढ़ते, क्लास 8 में महाभारत पढ़ाते, क्लास 6 में बुद्ध चरित्र पढ़ाते। व्हाई डोंट यू इंक्लूड दिस इन अ सिलेबस? बट हम लोग का बात तो आई होप कहीं तो सुना होगा किसी ने। But I'm so thankful, sir, कि I had to come here and really thank you for what you've given to us and to the posterity in the future. And also, sir, I hope कि आप और भी books लिखे, something मतलब and all this आप लोग तो बहुत क्या में हम लोग तो we are no one in the academic field, कुछ पता भी नहीं हम लोग को, we are just consumers. तो जितना भी academia है, I really hope कि आप लोग कुछ very simple colloquial में बच्चा लोग को जो हम लोग अपने books पढ़ा सके, कुछ भी हो, जैसे कि ये बचपन में हम जो श्रेक देखता है तो हम बहुत पता नहीं सीखा है, तो वैसे ये सब से हम लोग बच्चों को पता नहीं सिखा सकते हैं। तो आप जो भी एकेडमिया यहाँ में जो भी स्कॉलर्स है आप लोग को तो ज्यादा नॉलेज होगा, तो आई होप कि आप ये प्लेटफॉर्म को यूज करके हम लोग को प्रोस्पेरिटी जो हम लोग को है, हम लोग का बच्चा लोग को जो कुछ भी नहीं मालूम है वो लोग को आप लोग ये नॉलेज दे पाए जो कहीं नहीं मिलता है, सर। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आप बीजू बुक लिखा है और आपका सारा बुक हम खरीदे। इनफैक्ट हम अभी हमें रजिस्ट्रेशन में बोल कि सारा बुक मेरे बुक करके रखो, तो खत्म हो जाएगा। तो सर थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन टू आवर सोसाइटी। सर ये थैंक यू बोलने के लिए आए हैं।
Good afternoon. Mamung, I think I am the first one to book those books there. Very good afternoon. Respected Padma Shri Sir Y.D. Thongchiji and ever-inspiring Dani Sulu Sirji and all the dignitaries. Akrana, naming was 7 years, naming phone bala, to share my experience in 2 minutes, as instructed by Sister Anna. I won't take much of your time. So, I started my PhD way back in the year 2015. I was posted in West Kamen, sir, in a government college, Bongela. I was there for long 8 years, and it took me 7 years to finish my research. And while researching, it was none other than Aku Gyati Rana. He was constant source of help, and it was not just his books. I was personally in touch with him. I was calling him on and off every time. And sir, I take this platform to express my gratitude. I don't have word like my previous speaker, Nani Mamung, have said already. You might not see the impact right in front of you, but somewhere it is making a great impact. And I am standing here, and I'm ever grateful. You have been such a help. So ladies and gentlemen, I didn't introduce myself. Those who don't know me, I am Dr. Keme Mamung. I am working as assistant professor, and currently I am posted here in Government College, Doimuk. Previously I was there in Bongila, sir, your district, West Kameng, and Populi Score, to share my experience. Populi Score was the greatest help, and I was the very continuous subscriber of it. Sir, like Nani Mamu have already expressed, I also request you not to stop till you take your last breath. We will receive your word of appreciation, so I would like to give you this time. But if it's no word of appreciation, thanks. Good afternoon, everyone. Our most respected chief guest, Padma Shri Thongchi sir, and my or today's man of the day. Anna Mosi Agoline on Italian, and then all our scorers. Yes, coming. And scholars and the members of Apatani Interdisciplinary Research Society. Good afternoon once again. It's my privilege that I am here today as Mamung and Boda Mamung, and there are also all ladies. They've spoken about him. I get quite a lot from the Yatirana. So as appreciation वाला या words of advice वाला, I'll have two subject में मुझे बोलना पड़ेगा होगा. One is about my experience with our author, today's man of the day, and the other is about a bit about the else. मैं दो बात में बोलूँगा. दो means बहुत कम समय बोला है. So yeah, अभी आप लोगों ने जैसा बोला है, he has been really a source of knowledge and wisdom for many of the scholars who wanted to have some idea on Apatani society, the culture and the custom. उनको जैसा लिखने बोल के. In fact, the first time I came to know him is through Arunachal Times. उसका पहले मुझे पता नहीं था. I'm also a bit interested in reading, and उतना तो हम लिखता तो नहीं है, but reading में थोड़ा सा interest है, and then about the culture, tradition का बारे में हमको भी it's natural interest है. So he used to write in Arunachal Times. तो उस समय में I was in Delhi, then I was in Shillong. तब मैं ये online ये सब में पढ़ता था. Then I got interested, and when I was in Shillong, when I came here, I looked towards college. I also did not get any. In fact, I took to when I still practice मैं अपना पूरा tradition जो है कपड़ा सपड़ा हो या customs हो या
पूजा सजा होने से भी हम अभी तक प्रैक्टिस करते हैं. But then I took to Christianity also. Basically, why I took was because I was not having any means where I could get to my rules, my custom and my culture. तो उसको मिस थोड़ा सा खोया हुआ जाता था. So the first time I got it in writing was his writing in Arunachal Times and all. तो उसका बाद में when I came back to from Delhi मैं शिलोंग आया. तो शिलोंग से जब मैं आता था उनका घर में ढूंढ के गया ना, आपको तो ढूंढ के गया कहाँ है बोल के गया, किराना कहाँ है. और I thought another engineer is there, it must be him. फिर बाद में ढूंढा वो नहीं है. फिर उनका अपना घर में जाके ढूंढ के गया. And then I used to follow his writing. And then उसके बाद में interaction हम दोनों चलता गया. And then when I came here, तो it was my privilege is another किताब second वाला volume जो वो लेके आया. Then we discuss और हमारे साथ में भी बहुत patiently इनके साथ में he was got lots of patience. ऐसा करके time मिलके we discuss a lot over it. And then luckily मेरा पिताजी का नाम पे फाउंडेशन पे हमने स्पॉन्सर फर्स्ट उनका सेकंड बुक को हमने ये कर दिया था, पब्लिश कर दिया था. And after that also we have been interacting with Popular Scope magazine. He was the man behind that publication also. So although I said I don't write much, वहाँ में भी हमने एक दो contribution उनका उधर में देखे. That's how we have been there. And that is besides the help जो किताब लिखा उधर से पढ़ के हेल्प जो मिला है वो तो बढ़िया ही था. But more than that was since I am a bit active in my Facebook social media वाला को पहले ना थोड़ा सा पागल जैसा सोचता था, ये लोग कुछ और करने का नहीं है ऐसा करके. But then ऐसा होने से भी I got that जो youngsters जो पढ़ रहे थे, since I write कोई और लिखता नहीं उतना, तो I write something about Apatani ये सब के बारे में वो लिखता था. I used to get lots of call और मामू भी कभी कभी फोन करता था. Then I felt so hollow about myself because I am very nil in knowledge about our society. हाँ, तो जितना भी जाता है उसको लिखने से वो सोचते से out of 100 मैं 2 जानता हूँ, तो 2 को लिख रहा है तो आदमी को सोचता है हम बहुत जानते हैं. तो they keep asking जो कॉलेज वाला MPhil कर रहा है, PhD कर रहा है, हमारे पास बहुत लोग मिलते हैं. For 2013-14 से लेकर अराउंड 2020 तक तो कंटिन्यूस आता है. साल में तो 2-3 स्कॉलर तो आ ही जाता है, घर में कभी आ जाता है. एंड देन आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, हमको पता नहीं है. मीन्स आई ऑलवेज हैव अ वेरी वेरी सेकेंडरी नॉलेज अबाउट अपातानी सोसाइटी, अपातानी कल्चर. अभी भी हम मीडिंग को हम समझता नहीं है. आई इवन फाइंड डिफिकल्ट टू डिसिफर व्हाट ही राइट्स. इतना है ना, उसमें क्या लाभ हुआ बोलने से. आई यूज्ड टू से जाते रहना को आप पूछो ना बोल के अभी ऑल स्कॉलर दे गो दे. तो मुझे ये उससे छुटकारा मिल गया कि आई डिड नॉट हैव टू प्रिटेंड कि हमको जनता है जैसा. और यार समटाइम्स आई पास ऑन वेरी रॉन्ग मैसेज. मीन्स बोल ही देना है बच्चा लोग इतना है, कहीं वो उधर से महाराष्ट्र में पढ़ रहा है, उधर से फोन कर रहा है, कोई लोग दिल्ली में उधर से फोन कर रहा है. तो नहीं सकने से थोड़ा बना कर भी बता देना पड़ता है. तो since he's there, he's been quite a help on that side. It's not very visible on the facially visible नहीं है, but then that has been quite helpful to the students लोग ना. आपका पास बहुत भेजा है, तो मेरा पास भी अभी आजकल तो लास्ट 2-3 से उतना नहीं आता क्योंकि देखो मेरा पास कितना नॉलेज है वो कैसे नहीं आता है. That is it. As I said, I wish today once again we are releasing Tongchi Sangye Do Kitab release kiya, and then we are lucky enough to be with him here. And then from core of my heart and from my, I pray that you keep writing. और जो हमारा कल्चर है, ट्रेडिशन है, हमारा कस्टम्स है, हमारा रिचुअल्स है, उसको पास ऑन करने के लिए आपका बहुत ही उसमें योगदान रहेगा. इफ यू कीप इट इन रिटन फॉर्म. अभी तक तो हम लोग का रिटन फॉर्म तो नहीं है. Lots of things are getting distorted also, but then शायद इस तरह का लिखा रहने से it will you will leave for the generation to come a place from where they can work, a thread जहाँ से वो pick up करके आगे ले जा सकते हैं और रखेंगे. ये है. तो इसमें लिखा भी Apatani culture, even Apatani is not a Apatani word. हम लोग तो तानी है Apatani, I don't know कहाँ से आया. So this also is, all those things are there. Maybe down the line someone will find out कैसा करके ये गलत हम Apatani कैसा करके कब से आया, कहाँ से आया. अभी तक I also tried to read so many books, so many things.
पता नहीं चलेगा, वी कैन नॉट पिन पॉइंट कहाँ से कब से आपातनी हुआ बोल अभी पिन पॉइंट नहीं कर पा रहे। अदरवाइज व्हेन वी टॉक अबाउट अस, हम लोग पहाड़ में जब बात करते हैं तो आपातनी बोलते हैं, हम लोग उधर में से मुन तने तने मिल तने आतु उस ना उसमें वी डोंट टेक मुन आपातनी मिल लालू में से ना मुन तने आतु that is our original thing, but then all those things also maybe down the line कभी करेक्शन भी हो जाएगा होगा आप लोग जो अभी से यंगस्टर लोग आएंगे। Secondly, on the airs, so yeah, today's program, I must say, a very small program for air organization, but as Neil Armstrong said, a giant leap for the mankind, or moon में जो first step चला था ना, a very small step for the man, जो first step लिया, but a giant leap for the mankind. तो ये organization के लिए बहुत छोटा सा program है, but for the scholars who have always wanted a platform, it's a very giant program because you are facilitating a platform where they can keep their research works, where the research works will be appreciated, where the papers will be preserved for the posterity, for the people who are interested to know about Apatani, various different features of the Apatani. In fact, we also have been chairman for a long time. We have been in touch, छोटा से हम in touch में हैं, and then he is also a bit थोड़ा सा उस दिन भी डॉक्टर बात और उनको इंट्रोड्यूस कर रहा था। He's a bit एकेडमिक साइड में है, रिसर्च टाइम में, इसलिए थोड़ा सा not very normal भी था सोसाइटी ना, थोड़ा सा एकेडमिक में ज़्यादा होने से उतना नॉर्मल नहीं होता तो not very, I mean not very practical about the right side of thing, is more about towards the academic side of thing. I remember when he passed his class 12, वो आया था मेरा गुवाहाटी में आया था, क्या बोला, सब लोग बोलते हैं उसको इंजीनियरिंग जाओ, जहाँ जाओ का वो बोलते हैं नहीं भाग के वो तो स्पेस स्पेस का बारे में पढ़ेगा, आश्रम उसमें जाएगा बोल के पढ़ के निकला था ना, भाग गया था। फिर अगेन से वापस आके और पढ़ाई के, एंड देन दैट रिसर्च मस्ट हैव ऑलवेज, एज ही सेड, छोटा से उसको देखा था तब से दिल में था, कॉलेज 12 पास किया था तो एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ेगा उनका, भाग गया था, फिर अगेन से वो आके पढ़ा, ऐसा करके दैट मस्ट हैव बीन देयर उनका दिल में हमेशा रहा होगा। एंड देन लास्ट 1 ईयर बैक उसको एक ये मिल गया ओपनिंग, he got a very good friends, उनका फ्रेंड का साथ में एक मिल गया, एक ग्रुप मिल गया आप लोग, तो ऐसा एक मौका आ गया ना, गॉड मस्ट हैव प्रोवाइडेड, जो भी है डेस्टिनी मस्ट हैव प्रोवाइडेड to create opportunity where you could bring your deep जो ड्रीम था उसको साकार करने के लिए, लेके आने के लिए लाया होगा। So I wish you all the luck, all for the Apatani Interdisciplinary Research Society. इसमें I've seen it and उनका ऑनलाइन में he has also shown it, बहुत बढ़िया है। Apatani के जितना भी रिसर्च पेपर्स आए, he has been collecting it, रिसर्च बेस्ड पेपर्स को। I have just bit diluted it, मैं थोड़ा सा डाइल्यूट करके रिसर्च नहीं हो करके आर्ट साइड को भी थोड़ा बड़ा लगवा दिया, but then it's purely his intention was कि it should, उनका दोनों का इंटेंशन वही था कि it should be only on the research, जैसे वो साइंटिफिक अमेरिका जैसा होता था उस तरह का होना चाहिए बोल के इनका ये था। I said it could be very limited, we are hardly Apatani बोलने से hardly कितना 30-35 थोड़ा इन्फ्लेट करके बोलने से 40,000 होगा, and how many other scholars hardly 40-50 अंदर ही होगा, तो थोड़ा इसको ब्रॉड बेस कर देता है। तो पोएट्री का साइड में भी, कहानी का साइड में भी जो लगता है उनको भी थोड़ा डाल दो बोल के, दैट इज हाउ इट इज देयर। एंड देन I'm sure we have been discussing, and their future plan is they would like to extend it to not confine only to the Apatanis, also extend to all the अरुणाचल का जितना भी अभी तक रिसर्च करके MPhil करते समय, PhD करते समय में या कहीं अपना इंटरेस्ट रिसर्च करने वाले का, so they would like to in years to come they would like to expand it, and then it will make it broader base, provide a broader base to the research scholars of Arunachal Pradesh, ये करेंगे बोला है। एंड देन आई होप आप लोगों का जितना यंगस्टर है, आप लोगों का ड्रीम जो है साकार हो जाएगा, एंड देन यू विल हैव ए वेरी वेरी वाइब्रेंट एंड वायलेंट ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ में वी विल होपफुली लिव टू सी कि
gems of the literature, gems of the scientific world comes out of your organization. ये हमारा तरफ से आप लोगों का विषय है. And then all the scholars today who have come, so nice to see you all. इसका बाद में he will be discussing on the Apatani culture. And then they also have a plan कि not only this time, in future also they would maybe once in a month, once in a 3-4 months they will have an interactive session with the Apatani scholars. So they will give a topic basis और topic basis का बाद में quarterly basis में सारा discussion होगा बोलते हैं. उनका ये idea है. So this is the first session. ये उनका ये first session है. इसके लिए all the best. Thank you. Next is a citation by Mrs. Kago Mariam once again to present the citation of our chief guest, Padma Shri Y.D. Tongchi. Good afternoon, everyone. Sri Yeshi Dorji Tongchi is a multilingual writer and translator, writing mainly in Assamese and then in English and Hindi. Till now, he has written 9 novels, 4 short story collections, 1 folktale collection, 1 biography and autobiography each, 1 travelogue, 1 drama and several one-act plays. He translated books from English and Hindi to Assamese and Assamese into English and also Hindi. And he has also edited various journals. Besides, he had written many articles, columns in daily papers, etc., which are not yet published in book form. His famous novels include Mon or Mukor Hriday, Sokata Manu, Sonam, Moi Akau Janam Lam, etc., while Papor Mukhor and Dhar Aru Ananya Galpa were his popular short story collections. His novels Sonam, Missing and Biskonya Deshal were made into Rajat Kamal Award of National Film Award winning feature film, while his other novels and few short stories were made TV serials and adapted to dramas. Many of his novels and short stories have been translated to other languages and are also taught in universities, colleges, and schools. His dramas written by him and adapted from his novels and short stories were staged in many places of the country and had also won prizes in dramatic competitions. Many research scholars have already received PhD and Doctor of Literature degree doing research work on his works. Yeshi Dorji Tongchi is honored with as many as 24 prestigious awards, foremost being the Padma Shri Award by the Government of India and Sahitya Academy Award in Assamese language for his novel Mon or Mukhor Hriday. His other awards include Sukhapa Award from the Government of Assam, Assam Valley Literary Award. In 2021, he was conferred with Doctor of Literature honoris causa by Jupiter University. Thank you. Thank you, ma'am. I once again call our beloved chief guest, Padma Shri Y.D. Tongchi here. Respected Ganesha Sir, before you are taking your name, let me take the name of President Apatani Interdisciplinary Research Society. Yes, Kathy Rana, the author. There are a lot of respected persons. I won't be able to take names of everybody, but I address them also. And young scholars, students, and brothers and sisters who have gathered here. Well, what I wanted to say, I think, was covered by our Dani Saru sir, because I also wanted to speak about Apatani Interdisciplinary Research Society.
I think it is one of the best steps taken by any person in Arunachal Pradesh. It is an innovative one. At the same time, it will be really a very, what do you call, important step forward in the field of research in Arunachal Pradesh in future. Not only in Arunachal Pradesh, it may go to the country, it may become international one also. And it encompasses all the departments, that's why it is called interdisciplinary. It is not only confined to the scientific research, because he being from a person from science, the scientific research is also included here, including agriculture, which is very important for the place like Arunachal Pradesh, horticulture, pisciculture, whatnot. And along with it, he had included the subjects like heritage, like dictionary also, and this our what you call mythology, all these things. Mythology was also there, no? So it will go a long way, and I really provide a futuristic impetus, futuristic dream for us, and it will fulfill a lot of unknown things. I think जो रिसर्च के थ्रू से हम लोगों को मिलता है, आज का जमाना जो है रिसर्च का ही जमाना है. This is the age of the research. We have to invent many new things. The world is going, progressing, going ahead with all these research works, whatever may be in the field, in every field you can do the research. And that is why the step he has taken is very encouraging one, and I hope it will really shine in future, and it will do a marvelous job, not only for India, not only for Apatani, not only for Arunachal Pradesh, but for whole world in every field of activities. My best wishes for the progress of क्या बोलेगा स्किल है जो देश के लिए, अपना सोसाइटी के लिए एवं और कम्युनिटी के लिए जो दिल में करने का जो क्या बोलता है ड्रीम सपना रखता है, जो कुछ करने का सपना रखता है, उसका ये जो है फर्स्ट स्टेप है. तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनका जो ड्रीम है जो वो फुलफिल हो. About the Apatanis, when we talk about Apatanis, or not only about, let me speak first about the Apatanis. We used to read about Apatanis from the books of Dr. Crevel Ilwin. When I was reading in the school, I used to read the books of Dr. Crevel Ilwin, as well as Ursula Bloom, who was the wife of Deputy Commissioner of her name was Ursula Bloom. Later on, she went to South Africa and then stayed there, she settled there. Ursula Bloom wrote a book on Naga. And she came to Zero and she wrote a book, Hidden Himalayan, I think so. The name of the book was Hidden Himalayan. Then I used to read the books of Dr. Crevel Ilwin, and I was to wonder, reading about Apatanis, I used to wonder that this is one of the tribe which is really very advanced in every field. At that time,
when we were at the stage of our childhood, Arunachal Pradesh was very backward. All the tribes were backward. Our tribes did not know how to even wear their clothes. But reading about Apatanis, I came to know the method of the agriculture of Apatanis, method of the house construction, about the festivals, about the wars that they used to have with the neighboring nieces. About all these things I came to know from the books of Dr. Venerable Elvin and Ursula Bloom. And after that, I went to, when I was, I just entered in the service, I went to Zero Valley. It was really mesmerizing. I saw the beautiful cultivation fields. I saw the pine groups, I saw the bamboo groups, I saw the Apatani villages, and I saw the Apatani culture, and I was mesmerized. Really, it is a very advanced tribe of Arunachal Pradesh. So, after that, we used to read about Apatanis written by our Takekani. But Takekani later on drifted to other subjects. I don't know what he is doing right now. So, Jati Rana ko mila. I think we met at around 2011, not very long ago. I was president of Indigenous State and Cultural Society of Arunachal Pradesh, IPSAP, and then at one of the platform of IPSAP, I met him, and my first impression of Jati Rana was that he is one of the person who knows really about his own tribe, heritage of his own tribe, about the culture of his own tribe, about the tradition of his own tribe, about the mythology of his own tribe. While speaking, while he was delivering lecture, he started citing proverbs, idioms of Apatani. जब उसने बोलना शुरू किया अपरानी का बीच में वो दो प्रभाव बोलना शुरू किया तो इडियम्स बोलना शुरू किया तो हमने अरुणाचल में किसी व्यक्ति को किसी आदमी को लेक्चर मारते समय अपना भाषा का इतना ज्ञान जाहिर करते हुए नहीं देखा है लेक्चर ऑन दैट डे तो हम उसी समय सोच लिया कि ये है एक सचमुच का आदमी जो कि अपना ट्राइब के बारे में गहरे से जानता है. I also cannot speak like you. If you ask me to speak about Serduk Pen, I won't be able to speak like you because I also like Salo mentioned that his knowledge of this one tribe is very shallow. Like that, my knowledge about my own tribe is very shallow. I will also not be able to speak about my own tribe, like Dr. Rana used to say. So, from that day onwards, we become very bosom friends. I used to encourage him to write. I used to send him. And he was made a member of the Arunachal Pradesh Literary Society also. Then I used to send him to represent Arunachal Pradesh in various forums. I talked him to 2-3. Recently also I have recommended his name in one of the seminars which is being conducted
at Dibrugarh or Kokrajhar. Again, I have recommended your name for another seminar, which you will be going. Then I used, whenever there is a women from different places, from universities, from the societies, from the literary bodies, I used to say his name from time to time. I used to recommend his name, so that he can speak about Apatani people, so that he can speak about the traditions and customs, heritage of the Apatani people, and that way the knowledge of Apatani people will be disseminated. People will come to know about Apatanis, about the ethos of Apatanis. It is high time for the people of Arunachal Pradesh, because if we do not document all these things, if we do not preserve all these things, then it is going to be lost. Actually, all our things, all our ethos, our knowledge system is orally transmitted from our forefathers. We did not have script, we did not have the writing system in Arunachal Pradesh. No tribe has got the writing system in Arunachal Pradesh. Although we speak that Monpas have their own script, but Monpas, that script is utilized only for preserving the Dharma Granantha, religious books. You will not find anything, not even folk tales, not even what you call about their cultural ethos, nothing except prayers in the Monpas script, which is actually not Monpas script, it is a Tibetan script. So we did not have any tradition of writing in Arunachal Pradesh. No tribe has got it. Whatever is transmitted, whatever was preserved, it was told orally. And who carried it, those orality was carried by our people. And those people who are older generation, now it is the time of, it is the age of reading and writing. We have got scripts, English scripts, Hindi scripts before us. We are more interested, now the new generation is more interested in reading in English, in Hindi, or whatever may be. We are not interested in oral traditions. We don't want to, earlier when we were young, we used to listen folk tales orally. Our mothers, our fathers, they used to tell us the folk tales. But nowadays, the young generation, the small child, what they will do, they will learn it through mobile or through books. So the age of orality has gone. As the age of orality has gone, we are not learning whatever was there in our society. We are learning it of foreign countries. We are not learning our own things. We are not learning our own folk tales. We are not learning our own proverbs. We are not learning our own mythologies. We are learning everything of which is foreign, which is available in the mobile. So it is high time that we listen to those older generations. Most of them have already died. Few have left. If we do not document it right now, after listening from them, we are losing a great chance to document our own heritage, our own ethos, our own mythology, our own folk tales. And that is being done by people like Gyati Rana,
people like Mamu, I think so, two Mamus were here and they were also doing a great thing, I think so. Because the way they have spoken, I like it. They are very much interested in those things, and Gyati Rana will be a guiding light for them. It's not so. So, it was a great privilege for me that I am releasing for the first time the book of Rana's Saab, Gyati Rana. I did not have any opportunity, and I was a little bit peeved at him because he had not given me any opportunity till now to release his book. So today I am happy man because he had offered that opportunity to me, and I feel myself privileged now. This book certainly will be very popular. You should not worry about how much it will be sold. He already said that he was not happy because his book was not selling. Many books which do not sell at early stages gets sold later on, becomes valuable. Those books which sold very fast, they are just like what you call दीपावली का वो जो रॉकेट जैसे है, एक बार उठ जाता है, आकाश में चमकता है, फिर गिर जाता है. I have seen many books in my life which sold like anything else, like a hot cake, as soon as it was published. But later on, nobody speaks about that book. But there are books which do not sell at initial stage. मेरा भी बहुत सा किताब है, सेल होता ही नहीं था, और पीछे देखा तो आस्ते 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 सेल बढ़ते गया, पॉपुलर होते गया. तो ऐसे होते हैं, इसलिए he should not be discouraged like that my book is not sold. And this book will certainly, अभी तो रिजर्व भी कर रहा है, पूरा आपका किताब ही रिजर्व कर रहा है, मैं भी रिजर्व करना मांग रहा था, क्योंकि हमारा भी अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी का हम लोग लेता है किताब, and we used to sell the books of the writers of अरुणाचल प्रदेश. हम लोग जब भी कोई राइटर उस किताब निकलता है तो हम लोग उसको खरीद लेते हैं और हम लोग फिर फर्दर सेल करते हैं. तो आप लोग भी अगर कोई किताब लिखता है, contact with us, we will buy your books and we will sell it further. Because जो आप लोग के पास में ऐसे होते हैं कि अरुणाचल में किताब मार्केट में ढूंढ के नहीं मिलता है, राइटर को ढूंढ के नहीं मिलता है, और राइटर लोग खुद अपना पब्लिश करते हैं किताब. पब्लिश करने के बाद राइटर भी ये क्या बोलता है, रीडर को ढूंढता है, कौन खरीदेगा, ढूंढ के नहीं मिलता है. रीडर जो है राइटर को ढूंढ के नहीं मिलता है, तो किताब कैसे सेल होगा. तो इसलिए हम लोग बीच में ऐसे काम कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी कि राइटर का भी फला हो, रीडर का भी फला हो, ऐसे काम हम लोग कर रहा है. तो उनका किताब पे हम लोग आधा खरीदेगा और फ्यूचर में सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन निकालते रहने चाहिए. स्पेशली ये किताब तो ट्रैश विथ माय कल्चर एंड फेथ. दिस इज द कलेक्शन ऑफ द articles on different aspects of the Apatani culture. So, these articles were written on different occasions, and he had already read those articles, and I think some of them have already been published in different magazines. Recently also I published one of his articles
I think I used to keep publishing his articles in Arunachal Pradesh Litterature Society का जो हम लोग का मैगजीन है प्रयास, उसमें हम बीच में उनको तकलीफ देता रहता हूँ कि हमको तो एक आर्टिकल दो। एंड रिसेंटली जब इफ्साब का गोल्डन जुबली हुआ था, गोल्डन जुबली की सिल्वर जुबली था, उसमें रीडिन बोल के जो संविधान हमको एडिट करने दिया था, उसमें भी उनका आर्टिकल हम पब्लिश किया था। ऐसे करके बीच में हम पब्लिश करते रहते हैं। तो अगर ये किताब हम लोग को भी देता तो हम लोग जरूर पब्लिश करता, मगर उन्होंने खुद पब्लिश कर लिया। वेल एंड गुड। तो ये जो है आर्टिकल, वो उनका लिखा हुआ आर्टिकल का कंपाइलेशन है। सेकंड जो है, उन्होंने फोकटेल्स को बहुत सुंदर से उन्होंने ये इसमें कंपाइल किया है, उसने लिखा है, कंपाइल किया है। क्योंकि फोकटेल्स हम लोगों का बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम लोगों का फोकटेल्स पे हम लोग खुलते जा रहा है, होते जा रहा है। तो इसने कहा था, ये जो हम लोगों का rightly she had said that in our textbooks, our own listing, cocktails are not found, our own culture is not found. हम लोग अपना वो जो अपना ट्राइब के बारे में कुछ नहीं मिलता है। ये बहुत ही राइट पॉइंट है। हम लोगों ने भी बहुत दिन से ये सोच के आ रहा हूँ कि अरुणाचल का जो टेक्स्ट बुक है उसमें ये सब इंक्लूड होना चाहिए, अरुणाचल के बारे में इंक्लूड होना चाहिए। आजकल जमाना का बच्चा लोग जो नया एनसीईआरटी का किताब पढ़ के जो आता है, हम लोगों ने बहुत नौकरी के, हम अभी रिटायर हो गया, नौकरी के समय में भी देखा है, जब से एनसीईआरटी का किताब पढ़ना शुरू किया है अरुणाचल में, तब से इंटरव्यू में भी अगर कुछ पूछता, अरुणाचल के बारे में पूछता है तो कोई बोल नहीं सकता है। बहुत शर्म का बात है। पुराना जमाने में हम लोग जब स्कूल में पढ़ रहा था, असमिस मीडियम में पढ़ रहा था, सबसे पहले हम लोगों को अरुणाचल के बारे में, नेपा के बारे में पढ़ाया जाता था। नेपा में कितना डिस्ट्रिक्ट है, कितना नदी है, कितना पहाड़ है, ये सब के बारे में बताया जाता, अपना हिस्ट्री को सिखाया जाता। मगर जब से एनसीईआरटी हुआ है, तो एनसीईआरटी जो है पूरा इंडिया के लिए किताब बनाता है, तो उसमें तो अरुणाचल का बात तो छोड़ ही दीजिए, पाकिस्तान रीजन के बारे में भी कुछ नहीं। तो आज इसीलिए हम लोगों का बच्चा लोग जो है अपना स्टेट के बारे में कुछ जानता नहीं है। तो हम लोग अरुणाचल प्रदेश लिटरेचर सोसाइटी, हम लोग यही कोशिश कर रहा है कि गवर्नमेंट को बार बार हम लोग बोल रहा है कि हम लोगों का अरुणाचल का बारे में टेक्स्ट बुक में ओके, जो टेक्स्ट बुक जो है हम लोग एनसीईआरटी का पढ़ते रहना चाहिए, मगर जो क्या रिपीट रीडर बोलता है ना, रिपीट रीडर बोलता है ना, क्या बोलता है रिपीट रीडर, जो एक अलग से सब्जेक्ट जो एनसीईआरटी का जो एग्जाम में नहीं आएगा मगर पढ़ाया जाएगा, उसको क्या बोलता है? तो ऐसे सब्जेक्ट में अरुणाचल का हिस्ट्री, अरुणाचल का ज्योग्राफी, ये सब पढ़ाना चाहिए बोल के हम लोग भी अरुणाचल का राइटर लोगों का लिखा हुआ पॉइंट, लोगों का लिखा हुआ पॉइंट, राइटर लोगों का लिखा हुआ फोकटेल्स, शॉर्ट स्टोरीज इंक्लूड करना चाहिए बोल के हम लोग भी डिमांड कर रहा है। बहुत बार डिमांड कर चुका है, एजुकेशन मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को बोल चुका है। And then Arunachal Pradesh government is also saying that yes, we will include it for ACRT. तो ACRT के साथ में भी हम लोग एक दो बार उसके बारे में डिस्कशन हुआ है। तो ऐसे करने से तो हम लोगों का जो अरुणाचल का जो राइटर्स लोग है, अरुणाचल का जो उनका लिखा हुआ वो स्कूल में पढ़ने मिलेगा, फिर अरुणाचल के बारे में हम लोगों को पढ़ने मिलेगा, और वो हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। हम लोग का अपना बारे में जानने के लिए, अपना बारे में जो है
अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन को प्रिजर्व करने में मदद मिलेगा. With these few words, I think I should complete my speech because I have taken a lot of time. Once again, I thank Dr. Hage Dole for inviting me to be present at this meeting. And I am also thankful to all of you for listening very intently my speech. Thank you very much. Profound reflection, your guidance aided to this gathering. Thank you once again. Now, to express our heartfelt gratitude to all those who made today possible, I now request Dr. Kos Sambyo, committee member of AIRS, to deliver the vote of thanks. Today is a very special day as we are celebrating the culmination of hard work, patience, and dedication. It is said a book is never the work of just one individual. While the word on its page may be authored by a single hand, its journey from an idea to a tangible creation involves the support of countless souls. As we gather here for a cultural dialogue on Apatani Heritage book release event of Sri Gyati Rana, I stand before you with immense gratitude and heart brimming with appreciation. I extend my deepest thanks to each and every one of you for being here. Your presence not only makes this event meaningful, but also strengthens the spirit of literature and shared wisdom. I would like to thank the chief guest, Padma Shri Y.D. Tongchiji, author Gyati Rana ji, for their valuable time. I'd also like to thank the advisor of AIRS, Professor Nanibat sir, and Sri Danji Sulu sir for their continued support to AIRS. Further, I would like to thank Directorate of Research, Department of Cultural Affairs, Government of Arunachal Pradesh for providing with this wonderful conference room. And I would also like to thank the partner, Papa Restaurant and Galleria for the support of this event. This event would not have been possible without the generous support of members of Apatani Interdisciplinary Research Society and the chairman, Dr. Hage Dole. In the end, let us remember the power of book, their ability to inform, inspire, and transform lives. May this book find its way into the hand of those who need it, and may its word resonate in a meaningful way. And further, I'd also like to thank Sir, Y.D. Tongchiji sir and Gyati Rana ji sir for inspiring all the research scholars for taking up the research related to the cultural affairs. Thank you.